Hello students, I am Gurjit. Again, welcome you all in my class. And today I am going to explain you the same chapter, second, polynomial, with the exercise 2.5. So in the previous class we have completed exercise 2.5 up till question 8, and from today we will start question number 9. So let's see here question number 9. The question is verify. Here we are having two parts and just we have to verify them. So first part is this and second part is this. So let's see here the first number part first. We have to verify. Verify का मतलब ये होता है कि हमको शो करना है कि ये लेफ्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे, ये चीज हमको यहाँ पर प्रूव करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नंबर पार्ट है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू x प्लस वाई x square minus xy plus y square. So this is our first question, and this is also one of the identity for the exercise 2.5 and which we will use in the next number question 10. Okay, so these are two identities, two more identities which you have to learn, because these identities will be used in the next number question 10. So you have to learn these identities. And here the question is asking to us, we have to verify this identity only. So इसको verify करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट साइड ये है, इसका राइट हैंड साइड ये है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है. इसका हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे. x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और बस हमें इसका ब्रैकेट ओपन कर देना है. और जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे हम देखेंगे कि हमको इसका लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जस्ट ओपन द ब्रैकेट. फर्स्ट वी मल्टीप्लाई x विद द एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस y, और इस y का मल्टीप्लाई हम कर देंगे इससे. ओके, पहले हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे. अब जस्ट वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. हाउ टू ओपन इट? फर्स्ट x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करा तो x पावर 3 आ गया. देन माइनस x मल्टीप्लाई बाय xy, सो x इंटू x स्क्वायर y, प्लस x का मल्टीप्लाई y स्क्वायर से करेंगे, सो वी गेट हियर xy स्क्वायर, प्लस अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट आल्सो. हाउ? सेम, y x स्क्वायर, सो x स्क्वायर y, प्लस माइनस माइनस y का मल्टीप्लाई xy से करेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पे x, y इंटू y क्या बनेगा, y पावर 2. Now again we have to multiply y into y square, so y power 3, and the sign will come here of plus. So what we did here, just very easy thing, very easy solution is here. Just we have to open the bracket. How to solve the question? First we start our solution with right hand side, and right hand side is this, and just we have to open the bracket. First we multiply this x with this full polynomial, and again we have to multiply this plus y with the next polynomial, and just open the bracket, so we get here this. Now just we have to solve it. So you can see here x square y and x square y. Here with x square y minus sign is there, and here with x square y plus sign is there. So these terms will be cancelled. Again xy square and xy square, these two terms with a different sign, so these will also be cancelled. Okay, now here we have x power 3 and y power 3. So here we got only x power 3 plus y power 3, and here you can see that x power 3 and y power plus y power 3 is our left hand side. So this is our left hand side. So we have started our solution from right hand side, and you can see here it is clear that we got left hand side. So it is verified. Okay. So this is our complete solution. So just you note down the solution in your notebook, and hope you have understood this solution. And the second number part is same method you have to use here. So just you open the bracket, so you get here, you will get here this. So this second number part I am giving you homework. So just you try this question, and if you are getting any of the problems, you can ask your doubt. Okay, now let's start our next number question 10. And the 10 number question is factorize each of the following. And here also two questions are mentioned here. And let's start our question.
And first number part is 27 y power 3 plus 125 z power 3. So this is our question and we have to factorize it. So first we arrange the given terms. So for this, first we have to arrange the given terms. So 27 can be written as 3y power whole power 3. मीन्स 3 y होल पावर 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 पावर 3 कितना बनेगा 27 एंड y पावर क्यूब एज इट इज. सेम एज 125 इज अ क्यूब ऑफ 5, सो 125z क्यूब कैन बी रिटन एज 5z पावर 3. ओके, हम 5z पावर 3 को जब ओपन करेंगे तो हमको यही मिलेगा. नाउ इट इज क्लियर दैट व्हिच आइडेंटिटी वी यूज हियर फर्स्ट. So just now I explained you 9th number question. So the same identity we have to use here for solving the 10th number question. And the identity is a cube plus b cube. And you can write in the form of x cube plus y cube is equals to. So this 9th number identity we use here x plus y x square minus xy plus y square. So this identity we use here for solving the question. So here you can see that x power 3 plus y power 3 is given. So it is clear that this identity will be used here. So first we have to find the value of x and y. How to find these values? Just we have to compare our question with the identity. So here we get x is equals to 3y and y is equals to 5z. So here we got the values of x and y. X is equals to 3y and y is equals to 5z, and these values we have to put here only. So here you can see that here we get our question. So first I am writing our question. यहाँ पे हमको क्वेश्चन मिलेगा तो हमने इसका क्वेश्चन लिख दिया और ये जो x और y की हमको वैल्यू है ये हमको इस आइडेंटिटी के राइट साइड में पुट करना है. जैसे ही हम इसमें राइट साइड में पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा आंसर. तो चलिए देखते हैं x की वैल्यू क्या है 3y, y की वैल्यू क्या है 5z. अगेन हियर वी हैव टू पुट x स्क्वायर, वैल्यू ऑफ x इज 3y, सो 3y स्क्वायर. क्यों किया है हमने स्क्वायर? क्योंकि फॉर्मूले में x के साथ क्या लगा हुआ है पावर ऑफ 2. माइनस x इंटू y, वैल्यू ऑफ x इज 3y एंड वैल्यू ऑफ y इज 5z, प्लस y स्क्वायर, वैल्यू ऑफ y इज 5z होल स्क्वायर. ओके, नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट. So 3y plus 5z. Here 3y whole square. So 3 3s are 9. Y into y square. Okay. Now just we have to multiply here. 3 5s are 15. Y z. Okay. And then plus 5z square. 5z square means 25z square. So 25z square. So this is our answer. These are the factors of the given question, and this solution just you note down in your copy, and if you have any of the problem doubt, so you can ask your doubt. And same as question number 2 we have to do, and using the identity only. So this question just you try. I'm just explaining you here that 64 can be written as 64 is a cube of 4. So 64 can be written as 4m whole power 3. Same as 343 is written, and 343 is a cube of 7. So 343 n power 3 can be written as 7n power 3. So first we arrange the given polynomial like this, and then we have to use the identity. And here which number identity we use here? Second number identity of 9th question, that is x cube minus y cube. So just you try this question and you can ask your doubt. Okay, now let's start our next question 11 factorize, and question is 27x power 3 plus y power 3 plus z power 3 minus 9xyz. And for solving this question to factorize, we have to use a new identity that I have written on the board, and you also note down in your copy. So the identity is which we are going to use in this number question is x3 plus y3 plus z cube minus 3xyz. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to first bracket x plus y plus z
and in the second bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So this identity will be used here for solving this question. So now let's start here. First we arrange our question. So 27 is the cube of 3. So 27x power 3 can be written as 3x power 3. Okay? And y power 3 we write as it is. Same as z power 3 we write as it is. And here 9xyz we write as it is. But this 9xyz will be the value of 3xyz. Okay? So here you can see now our question is 3x whole power 3 plus y power 3 plus z power 3 minus xyz. Now this formula will be used here. So for this first we find the value of x, y and z. So for this we compare our question with the formula, and here we get value of x is equals to 3x. Value of y is equals to y and value of z is equals to z. अब यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन भी एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, फॉर्मूला भी एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में आप फॉर्मूला को वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं, मींस एक्स वाई जेड की प्लेस पर आप ए बी सी भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, वैल्यूज आ गई हैं। अब इस वैल्यूज को हमको कहाँ पे पुट करना है, जस्ट हमारे फॉर्मूला में पुट करना है। तो सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन लिखेंगे 27x पावर 3 प्लस y पावर 3 प्लस z पावर 3 माइनस 3xyz। फर्स्ट वी राइट आवर क्वेश्चन, एंड यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारा सॉल्यूशन। तो चलिए रखते हैं, x की वैल्यू क्या है 3x, y की वैल्यू क्या है y, z की वैल्यू क्या है z। फर्स्ट ब्रैकेट में रख दिया। अब हमने सेकेंड ब्रैकेट बनाया जो इसी के साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एक्स इज 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वैल्यू ऑफ y इज y, z स्क्वायर, वैल्यू ऑफ z इज z स्क्वायर माइनस, ओके, x y, x वैल्यू इज 3x, y वैल्यू इज y, y z, y वैल्यू इज y, z वैल्यू इज z and zx. You can see here value of z is z and x value is 3x, 3 of x. Now just we have to solve it to get the answer. So here first we write question and now just solve it. 3x plus y plus z we write as it is, and now just we have to solve it. 3x whole square means 3x square 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3xz. So this is our complete solution. So let us revise again. What to do in this for this question? First we have to use this identity, and just we have to put the values of x, y, z in right hand side. So as we have put all the values, and just we have to solve it, like 3x whole square, 9x square, y square, z square, 3xy, yz and 3za. So this is complete solution. So hope you have understood the solution, and just you note down this solution in your notebook. Okay, now let's come to the 30 number question, and the question is if x plus y plus z is equals to 0. Here this x plus y plus z is equals to 0, this is given in the question. Then we have to show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. अब ये भी एक नई आइडेंटिटी है कि अगर x plus y plus z की वैल्यू 0 होती है तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब किसके इक्वल होता है, x 3xyz के। फिर से सुनिएगा कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xyz के इक्वल होता है। और यह आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होती है, कब यूज होती है, जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होता है, 0 के। मतलब यह इस आइडेंटिटी का यूज सिर्फ एक ही कंडीशन पे किया जाता है, अगर x y z मतलब यहाँ पे जो 3 नंबर्स x y z लिखे हुए हैं ये 0 होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सेम आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। तो वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन विद दिस आइडेंटिटी। सो वी हैव
x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z, x square plus y square plus z square minus 6y minus yz minus zx. So we start this question with this identity. Okay. So now we have x plus y plus z is equals to 0. Value of x plus y plus z is given to us, which is 0. So here is x plus y plus z. So in place of x plus y plus z, which is given here, we put 0. Everything we write as it is, just only in place of x plus y plus z we put 0. So let's see here, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to. In place of this we have to keep 0 and the next number we write as it is minus xy minus yz minus zx. Okay. Now what to do? Next number is step. Now we know that if we multiply any of the number with 0, so we get the answer 0 only. जब हम किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 0 मिलता है. तो यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, इसका जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हमको क्या देगा? 0. So it's equals to 0. Okay. Now just what to do? Just transfer this. So x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. हमने क्या किया है नेक्स्ट स्टेप में? जस्ट ट्रांसफर. 3xyz माइनस में था, उसको ट्रांसफर किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में. So x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. And you can see here this only we have to prove here. It means it is proved. So this is our new identity. Let's revise this question again. X cube. First we use this identity x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Now here in place of x plus y plus z we put 0 because it is mentioned in the question, and when we multiply any of the number with 0, so we get the answer 0 only. Now just we have to transpose this 3xyz. So 3xyz will come here. So our answer is x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. So this is our new identity, okay, which we use in the next number question 14, okay, which we are going to use in the next question. So x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz if x plus y plus z is equals to 0. So hope you have understood this solution. So just note down this solution in your copy. So let's start our next number question, which is question number 14, and the question is, without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. So here the question is, we have to find the value of these. So let's start this with our first number question, minus 12 power 3 plus 7 power 3 plus 5 power 3. So here you can see that which identity we use here. Here we use the identity if x plus y plus z is equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. तो यहाँ पे हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है कि अगर x प्लस वाई जेड तीनों का सम अगर 0 होता है तो इस आइडेंटिटी का यूज होगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम x, y, z तीनों को ऐड करके देखेंगे कि ऐड करने पर इतना 0 आंसर आ रहा है कि नहीं. सो हियर x is equals to -12, y is equals to 7 and z is equals to 5. यहाँ पर x, y, z तीनों की वैल्यूज आ गई हैं. अब हम इनको ऐड करके देखेंगे. -12 plus 7 plus 5. So here you can see that -12 plus 12. -12 and 12 will be cancelled. So here x plus y plus z is equals to 0. So what to do here? For solving it, first we add x, y, z. Okay. So here the value of x is -12, value of y is 7 and value of z is 5. So we add all these three numbers and just we see here after adding them we get here 0. Okay. So if x plus y plus z 0, then x cube plus y cube plus z cube will be equal to 3xyz. So here therefore -12x cube plus 7x cube plus 5 cube will be equal to 3 into x. Value of x is -12,
y value of y is 7 and z value of z is 5. Okay. So x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. अगर इन तीनों का आंसर 0 होता है, प्लस करने पे 0 आंसर आता है, तो ये किसके इक्वल होगा? 3xyz के। और यहाँ पर हमने xyz की वैल्यू रख दी है। x की वैल्यू है -12, y की वैल्यू है 7 और z की वैल्यू है 5. Now just we have to multiply them. So minus 12 threes are 36 and 7 into 5 35. And just we have to multiply them here. So minus 36 into 35. So you can see here 5 6 are 30, 0 carry 3, 5 3s are 15, 16 17 18 and 6 3s are 18 8 carry 1 and 3 3s are 9 plus 1 10. So here 8 plus 8 16 6 carry 1 1 plus 1 2 and 1. So here the answer came minus 1260. So this is our complete solution. So first part it has completed. This first part I have explained you. Now the second number part again you have to do with the same method. First we add all the numbers 28 minus 15 and minus 13. So you will get here 0. So use the same identity and solve it. So this is our complete solution. So just note down this solution in your copy, and if you are getting any of the problem, so you can ask your doubt. Okay. Now let's start at question number 16, and this question I am reading from the book, and you also see question from book. So the question is, what are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volumes are given below? So in this number question we have the volumes, 2 volumes are given, and we have to find out the possible dimensions. Dimensions means volume. अगर ये वॉल्यूम दे रहा है रेक्टेंगल का, सॉरी क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इट मीन्स इसमें हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 थिंग्स हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3x पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर, and the volumes formula for cuboid is length into breadth into height. It means we need to find here length, breadth and height. Length into breadth into height. So just again the same thing we have to do for this question. First we take out the common numbers. So here you can see that common is 3x square. Okay. So here the non-common numbers we write in the bracket. So 3x square we have taken out as a common. So here non-common number is x. And here 3x square is outside. So here 4 3s are 12. So 4 plus क्या करना है हमें इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे? इसमें जो आपको दिख रहा है जो दोनों में आया हुआ है उसको हम बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 3x स्क्वायर दोनों में था, हमने बाहर कर दिया। इसमें क्या बचा? x और इसमें क्या बचा? 4. So here there are 3 factors we got here of the polynomial 3x square and x minus 4. Here 3x square and x minus 4 are the factors. Okay. In which one will represent length, another one is breadth, and next one is height. So here length is equals to 3 unit x square unit, and height is equals to, so this is our complete solution. So just you note down this solution in your copy. And second number part I am giving you as a homework, but you listen here. I am giving you just a hint how to solve the second part. So first the second part is given here this. First you take out the common things. So common second number part is 12k y square plus 8ky minus 20k. So first you take out the common things. So here the common is k and 4. So 4k we take it outside. तो 4k बाहर निकल गया, क्या बचा? 4 3s are 12 y square. 4 निकल गया, क्या बचा? 2y and 4 5s are 20. So this came. Now just use the splitting method here. अब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? स्प्लिट करेंगे आप तो आपको 2 फैक्टर्स मिलेंगे और एक फैक्टर ये दिया हुआ है, तो 3 आपको उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिल जाएंगे। So just try this question second number part. And your exercise 2.5 has completed. It means your second chapter has completed,
and you just complete your copies as soon as possible, and if you are having any of the problems, you can ask your doubt. Thank you.